वजह से लिंक ओपन नहीं हो रहा है या फिर कुछ और इश्यू है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। सो लेट्स जस्ट सी। परफेक्ट। सो जो आज का हमारा टॉपिक है इज करियर ट्रेंड्स एंड इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज। द सेशन विल बी प्रेजेंटेड बाय आवर पीएन मूर्ति सर। इफ आई take some time to introduce Murthy sir, it will take really long क्योंकि उनका जो vast experience है of more than 30 years सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इंडस्ट्री में है। काफी रिसर्च और हर एक सेशन के लिए बहुत ज्यादा डिटेल में रिसर्च करते हैं और उनका एक अलग ही पैटर्न है जो भी डिटेल्स हैं। बिकॉज सर बैंगलोर में बैठते हैं, he heads our placements team and he is the DGM for placements team on national level. He takes care of entire things when he present. So we really can hope कि आज का जो हमारा सेशन है उसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी डिटेलिंग्स हमें मिलेंगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अगर हम बाहर देखते हैं वी हैव लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, हमें हर जगह से इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, जो एक रिसर्च के बाद एक आइडिया लगता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है और किस लेवल तक सही है, वो सबका एक क्लैरिटी हमें मिलता है। करियर ट्रेंड्स में वी विल नॉट टॉक ओनली अबाउट टेली। हम ऑफ कोर्स हम टेली के स्टूडेंट, हम टेली के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको ओवरव्यू भी मिलेगा कि ओवरऑल जो इंडस्ट्री है वो कहाँ ग्रो कर रही है, कहाँ क्या चीजें हैं, आपके लिए क्या स्कोप्स हैं, एंड हाउ यू कैन शेप योर करियर। जैसे अभी हम इस सिचुएशन पे हैं जहाँ पे वी आर ट्राइंग कि हमारा करियर किधर जाएगा, हम कहाँ से क्या स्टार्ट करके कहाँ क्या सोच रहे हैं, बिकॉज वी जस्ट सी जस्ट जॉब इज एन ऑप्शन कि हमने कुछ भी किया है, एक जॉब ऑप्शन है, बट इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं जो कि आज के हमारे सेशन में डिस्कस किए जाएंगे। So I would just like to request if we have Murthy sir with us on the stage. Murthy sir, अगर आप हैं तो please I would like to see if you are there, because I think somebody has question YouTube में क्या लिखने से आएगा। YouTube में आप टेली एजुकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज आप देखेंगे, टेली एजुकेशन DS डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज PT प्राइवेट लिमिटेड PL सॉरी, तो आप ये सर्च करेंगे टेली एजुकेशन तो आपको बहुत इजीली आ जाएगा। ये हमारा यूट्यूब का चैनल है। प्लस द बेस्ट पार्ट विद दिस इज दैट यू विल गेट हमारा जितने भी हमारे पुराने वेबिनार्स भी हो गए वो सब आपको वहां पर मिलेंगे। सो द गुड पार्ट ऑफ दिस इज कि आपके जैसे आपको अगर कोई रिकॉर्डिंग है या कोई सेशन आपका मिस हो गया है या फिर कोई रिलेटिव पॉइंट आपको ऐसा लगता है कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आप शायद दोबारा सुनना चाहते हो, आप यूट्यूब पे जाके वो देख सकते हो। आई विल रियली रिक्वेस्ट अगर आप एक बार जब भी आपको फुर्सत हो थोड़ा सा यूट्यूब पे जाके हमारे जो पुराने सेशंस हैं वो भी देखें, हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ बहुत सारे सेशंस हमने किए हैं। Yes, I think we have Murthy sir live with us. Sir, if you are there. Yes, Jyoti, I'm there. You are sharing screen, your screen? No, I'll stop sharing my screen. You can start. It will be easier and handy. Correct. Yes sir, so I've stopped it. आप अपना स्क्रीन शेयर करके आप स्टार्ट कर सकते हैं सर। आई थिंक मी एंड टीम इज रेडी। मीनवाइल मैं सभी को, जी सर अभी तो नहीं बट आई थिंक इट विल बी विजिबल। यस इट इज विजिबल सर। हाँ जी सर, नाउ इट इज विजिबल। राइट। यस, ऑडियंस में किसी ने मुझसे पूछा है कि YouTube का वो जो लिंक है टेली एजुकेशन अगर आप डालेंगे तो आपको YouTube से आ जाएगा। मैं आपको एक बार जल्दी से बता देती हूँ बिकॉज ऑलरेडी हमारा 5 मिनट निकल गया है। आप टेली एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड डालेंगे, सबसे पहले आपके पास आएगा टेली एजुकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आप सिर्फ टेली एजुकेशन DSPT डालेंगे, YouTube @टेली एजुकेशन DSPT, आपको टेली एजुकेशन डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड आ जाएगा, आपको सभी सेशन वहां मिल जाएंगे। सो नाउ विदाउट टेकिंग और वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, हमारे साथ मूर्ति सर हैं जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। सो मैं सर को कहती हूँ कि सर प्लीज अभी आप सेशन स्टार्ट कीजिए बिकॉज आई थिंक मैंने पहले ही 10 मिनट ले लिए हैं सेशन के। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। Murthy sir, welcome on the stage. I think everybody is waiting for this wonderful session on career trends and emerging opportunities, especially and shaping the careers of tele learners and everybody. So thank you, Jyoti. Thank you very much.
And good evening, namaskar to all my Tally learners who are attending this session, as well as the partners and also the non-Tally learners who are attending through YouTube. सबके लिए नमस्कार है. आज का दिन we had one more session in the Subhay morning on English version, career trends and emerging opportunities. I will have an hybrid model breaking both in English and Hindi, but maximum I'll try put it in Hindi so that it will be easy to understand you all. आज ऐसा टॉपिक ला चुके हैं हम बहुत रिसर्च करके बाद. मोस्ट ऑफ यू हर बच्चे टैली लर्न सिखाने के पहले सोचेंगे कि मेरा ग्रेजुएशन के बाद क्या करूंगा. आई वांट टू अच्छी नौकरी मिलना चाहिए, मेरे को अच्छी पगार मिलना चाहिए. यू विल हैव लॉट ऑफ एम्बिशंस टू योर साइड एंड नथिंग क्लियर. कुछ भी आपको आसानी नहीं रहता है हासिल करने के लिए. सो यू विल ट्राई एक्सप्लोरिंग लॉट ऑफ थिंग्स. इस दौरान हम बताने चाहते हैं कि 90% ऑफ पीपल, ऐसा आपके जैसे 90% लोग सोचते हैं इन ए वेरी स्टैंडर्ड मेथड में हमको जॉब करना चाहिए. जॉब के लिए क्या करना है, जॉब के लिए कौन सा स्किल पढ़ाना है, व्हाट आर द थिंग्स आई हैव टू डू बोल के वो सोच में पड़ जाते हैं. दूसरा 10% वो हटके सोचता है आई डोंट वांट टू डू ए जॉब. मैं नौकरी करना नहीं चाहता हूँ, खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ और खुद का कुछ अपना करना चाहता हूँ. those people will be that. For them it is excellent opportunity. and ये skill set जो टैली आप सीख रहे हैं, very powerful skill set, you are learning it, I would say very confidently and proudly also. ये आप any direction it can take you. It's not only job. आप खुद मालिक बन सकते हो, कंसल्टेंट बन सकते हो और ट्रेनर भी बन सकते हो, anything. But unlike like other softwares, other skills like SAP है, डिजिटल मार्केटिंग है, माइक्रोसॉफ्ट है, उसमें क्योंकि वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकते हैं, यू विल नॉट हैव दैट अपॉर्चुनिटी. टैली क्यों है बोले तो दिस टैली इज यूज्ड बाय एसएमएस एंड ह्यूज अपॉर्चुनिटी यू हैव. एनीथिंग यू कैन डू विद दिस सॉफ्टवेयर. सो लेट्स एक्सप्लोर व्हाट आर देयर. पहले इसके दौरान आई हैव डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. 4 ग्रुप में बनाया मैं इसको. पहले ओवरऑल द जॉब ट्रेंड्स कैसा है दुनिया में देखेंगे अपन, बाद में इंडिया में कैसा है जॉब्स, देन वील सी फॉर द टैली अपॉर्चुनिटीज क्या क्या मौका है अपने टैली के अंदर, वील सी इन दैट वे. तो ये एक रिपोर्ट आया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से अपने को. दैट्स अ वेरी लेंथी रिपोर्ट, बट फॉर आवर कन्वीनियंस आई हैव टेकन मेजर पॉइंट्स इन दैट. 2030 में देयर आर 39% कोर जॉब स्किल्स बदलने वाला है. That is going to happen, and we already experiencing that BPO jobs once upon a time itna demand tha ki everyone was going to the BPO jobs, telecalling jobs. Now that has taken care by AI bots, chatbots aa gaye AI ki, they are taking care in banks or anywhere. wahi first level ki solve kar de rahe telecalling ki. And also the same impact we are seeing in accounting also. This is routine jobs are going to change and new jobs are going to come up. उसके लिए क्या डिमांड रहेगी आगे के फ्यूचर में. टेक्निकल स्किल्स आप देखें तो आजकल भी बहुत सुनते जा रहे हैं अपन AI tools everywhere, chat GPT whatever AI related you are listening it. अभी वो स्किल्स आगे भी डिमांड रहेंगे. AI एक्सपर्टाइज, बिग डेटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी. उसके बाद में दूसरा डिमांड रहेगी आपकी सॉफ्ट स्किल्स. सॉफ्ट स्किल्स क्योंकि इसमें ऐसा रहता है कि सॉफ्ट स्किल्स इज नॉट दैट यू बेटर टॉक इन इंग्लिश, इज नॉट दैट. क्रिएटिव थिंकिंग, रेसिलियंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड लीडरशिप, दिस गोइंग टू प्ले a vital role shaping your careers. And major priorities रहेंगे, emerging priorities, social influence, it should be very इंटरैक्टिव, बिल्डिंग नेटवर्क, टैलेंट मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, स्टीवर्डशिप. इसके दौरान एम्प्लॉयर्स अभी इनके पर ध्यान करके उनके एम्प्लॉयर्स को रीस्किल करवा रहे, अपस्किल करवा रहे, ताकि दे हैव टू मीट दी एडवांस टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स. ये आज का डिमांड है. कंटिन्यूइंग दी फोरम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट,
adapting the change in the job market. क्या बदलाव आ रहे जॉब मार्केट में? एक तो साफ ज़ाहिर चल गया अपने को, we have to be continuously updating with courses, certifications and skill enhancements. मेरे को इतना खुशी है कि you all are on the right track because you are updating with a new skill set, that is Tally certification. It's excellent. I would thank you all of you who have been enrolled for Tally certifications. इसके अलावा you have to also have updated digital skills. आजकल everything, now I am connecting you through one digital platform called GoToWebinar or a YouTube, whatever you are watching it. So you should know, आपको पता चलना है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, how to use that, how to benefit that. Digital tools, AI and automation technologies. At the same time, you have to be very flexible, agility. You have to ready to accept new roles. You cannot say that my accounting job करेंगे, accountant ही रखूंगा मेरे को. No, there are a lot of job changes are happening. So we need to continuously do research. उसके दौरान पूरा जानकारी रहना चाहिए and ready to adopt the new roles also. At the same time, you should also have networking and mentorship. Always constant touch अपने को कंपनी से, इंडस्ट्री से ताल्लुक, नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि इंडस्ट्री में, जॉब मार्केट में क्या बदलाव आ रहा है, that is what you need to see that. As I said, emotional and soft skills. ये बदलाव में your strong communication, teamwork adapt is very important. Your communication skills plays a very important role compared to other skills. As post-COVID, we are seeing the hybrid work models. Somebody are working from home, somebody work from the office, they are doing it. Remote access basically has been enhanced a lot. अभी evolving job market, बदलाव क्या क्या है? Why the major 3 points if you look at जॉब मार्केट में क्या बदलाव आया, तो अगर अपन पीछे से अभी तक if you start seeing it, observing it, there's a rapid technological advancement. टेक्नोलॉजी तो इतना आगे बढ़ते जा रहे. तो yesterday we were talking, before we are talking computers, then internet has introduced, the lot of things have come. पहले इंटरनेट थ्रू डायल अप फोन पे आता था, बाद में 1G, 2G, 3G, now we are in a 5G. The moment 4G onwards, you can see you started watching videos on your mobile, on your laptop. That is the vast advancements we are getting. Further, now we are in a 5G. We don't know what advancements will come in 6G, 7G, and so on. And at the same time, we are seeing globalization. अभी आप कौन सा भी गांव में रहिए, but you can interact entire world. आप गांव में बैठे भी यूएस क्लाइंट से काम कर सकते हैं. That is the beauty of this globalization has happened. And there's a rapid change in business models. Earlier, it was a traditional business models used to be there. Now there's a drastic change in the business models. That's the reason traditional jobs are going to replace with new opportunities emerging. I will tell you a few examples also in coming my slides. इसके दौरान we have to be ready, continuous learning and skill upgrading. There is no other way, no excuse also. If you are not upgrading your skills, आप पीछे पड़ जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे. You have to remember that. A small example I will give you in accounting. Before computerization of accounting, there was an accounts manually managed it in books, that is called ledgers. Bookkeeper, data entry, clerk, manual ledger entries, voucher posting, basic accounting through paperwork used to happen. आज का दौरान देखें तो आप, since the digitalization happened, rapid changes and all that, today we are focusing more on GST executive, accounts manager, compliance, MIS reporting, usage of Tally, GST, TDS, Excel, blah blah. We are seeing it. This is the current scenario. अभी इसकी फ्यूचर देखे तो आगे का दिन कैसा रहेंगे. Is these jobs nowhere will be continuing it? It will be drastic change is going to happen. What we have seen in the past and present. आगे भविष्य में कैसा रहेंगे? Digital accountant, freelance consultant, cloud accounting, automation, remote services, Tally Prime. तो अभी पढ़ रहे हैं आप लोग, उसमें कितना बदलाव, Tally ERP
9 से टैली प्राइम की आप देख सकते हैं how much drastic changes are happened in data analytics, remote tools. This is going to prevail. Now, are we ready with these tools and the skills? You need to analyze it. Whoever is being ready, they are being in the premium brackets, I would say that. अभी जो लोग जितना भी बेसिक सीख लिया AI tools के, they are flourishing in the job market today. जितना भी उनको पता है, they know how to use AI tools, prompt engineering, prompt commands and all that, they are getting a faster employability than compared to other people. Because demand and supply, it will be depends on that. वैसी दौरान, if you are interested, आपका एक मकसद है कि I want to settle in accounting profession only, then you have to acquire the advanced technologies which is going to happen in accounts domain. Like as I said, cloud accounting, accounting with AI is coming up, financial with AI, anything AI is going to mix up with the accounts. That's damn sure how it is going to happen. Now, coming to in continuation of your World Economic Forum report and future market, there are identified 6 key trends predictions for future job market. उसके दौरान एक तो टेक्नोलॉजी एक है, टेक्नोलॉजी के अंदर as I was repeatedly saying, AI tools, automation and blockchain, and the gig economy and remote work. Gig economy is not nothing but project based work. अभी ये standard working नहीं रहता है, like already it is practiced in US markets. They hire people based on the project base. They don't take permanent regular basis, and they will pay very hefty based on the project cost and all that. And hybrid work. So sometimes you may work offline, sometimes you work on online. That's the culture is going to happen. And there will be big opportunity for freelancing. आपको खुद मालिक बनके आप कर सकते हैं work. There is no need for you to report to a manager, maintaining time, office time, holiday ऐसा नहीं है. जब चाहिए आप freelancing on the deadlines आप काम करेंगे. This is going to happen in Indian market also in coming days. Sustainability, green economy sustainability, एक और एक area है which is developing a very highly, followed with healthcare and biotech fields. As you know that industry digital transformation is happening across industries. Definitely there will be huge demand for tech skills. Whoever has been confident in tech skills, it's going to be a huge demand. And globalization, changing workforce, demographics, cross-border employment, work diversity. Since earlier we used to, for example, आपको एक उदाहरण देता हूँ. पहले अपने को कुछ हाउसहोल्ड सामान लाना चाहते तो पहले क्या होता था? Physically we used to go to kirana shops. We used to go to some kirana shops. The kirana shops reshaped as a supermarkets. These supermarkets, now that latest trend is, you don't need to go physically. Sitting at home, you can order online. This is called dark stores. अभी जो बोल रहे हैं Zomato, Swiggy or Zapto, whatever, they're maintaining dark stores. आपको जाने की जरूरत नहीं है. Sitting at home, you're ordering the whatever you wanted. See how these changes has drastically have changed. ये बदलाव भी अपन employment में भी दिखेगा और दिख रहा भी आपने. ठीक है. Now the gig economy, as I said you, freelancing trends, the rise of independent or contract-based jobs is going to increase in Indian job market also. It is already studied in US markets and developed countries. The same thing will be followed here. जैसे आप रिसर्च करो इसके बारे में, popular platforms you have Upwork, Fiverr and Total. This encourages the freelancers इनको work देने के लिए. If we are outstanding, your profile is something unique and you can do, they will allocate work to you from the abroad, other countries. And आज पहले standard income policy रहती थी कि only through job, standard, used to get monthly salary. आज का दुनिया में you can have different multiple income streams. आपकी मर्जी है आपको कैसा earn करना है. You can become a blog writer, you can become an influencer,
working at. That is how a lot of income streams have come up because of this digitalization, advancement of the technology. As I said, employership towards project-based hiring. Now they are not preferring as a regular employee. They will hire people based on the projects, and the remuneration will be, it will depend on the cost of the project and all that. That way it happens. This is the generic global standards about the job market as per the old forum report I have shown you. I went and did a lot of research in depth. What about the growth rate of accounting jobs in India? So इसके लिए both my research करके last 3 years data I try to gather the data. How many accounting jobs are posted year on year? From last 3 years I have taken it. 2022 में आप देखें तो 280,000 jobs. 280 is not 100, thousands of jobs are posted. 23, there was a surge between 280 to 310. That is the increase of 11% jobs are increased from 22. Likewise, in 24, 23% increase from 22. And today, 25, it is increased 39% from 22. There's a steady growth, 8 to 10%. Accounting sector is growing constantly and creating thousands of jobs every year. एक खुशी की बात है कि it's not only metros, it is also increasing the accounting jobs tier 2, tier 3 cities also, where my Tally learners can benefit from study demand and long-term career stability. एक खुशी की बात है, हर Tally learner को job की शिकायत नहीं रहेंगी. There is ample of jobs. The reason for that, कारण क्या आएगी? The major reason is GST compliances. Digitization in the frequent GST and TDS updates are driving demand for skilled professionals. ये कारण है. Constantly, we are seeing that huge demand for the Tally professionals because of these updates on the GST and TDS. ये खुशी की बात है आप लोगों को. Jobs तो हमेशा generate होंगे. For this, you should have knowledge, digital compliance, e-invoicing, which make you expertise in these areas. So business seek accountants who have accuracy and legal adherence in digital environment. When you are confident in these areas, आप नौकरी मिलना बहुत आसानी हो जाएगी. And also at the same time, 23 onwards, there's a boom in remote and freelance roles in accounting. Remote accounting has surged across industries. The reason is the Tally is used by and large 90% by SMEs. Now outsourcing the freelancers for bookkeeping, GST filing, payroll. अभी छोटे startup companies क्या करते हैं? They can't hire a person full time. They are putting on a contract basis or outsourcing their routine accounting jobs to the freelancers. तो हर एक मौका रहेंगे आपको Tally learners को. You can be flexible, location dependent. You can make your career path by becoming a freelancer also. Now accounting jobs are growing fast. इतना fast हो रहा है कि because of the technology advancement. Tally trained professionals are demand for their ability to manage compliance, adapt digitally, work flexibly. Now अपन generic way में discussion कर लिए कि globally job market कैसा बदलाव हो रहा है due to technology advancement, AI tools, lot of things we have understood. और भारत में accounting jobs की statistics पता चल गया अपने को कि इस दौरान से 39% always and steady growth of 8 to 10% की हमेशा demand बढ़ते जा रहे accounting jobs की. And now we will come directly to on Tally professionals, which we totally 99% we always depend आधारित होता है कि Tally traditional jobs के ऊपर 9 to 6 jobs, accountant, whatever name you call it, accounts executive बोलो, accounts manager बोलो, whatever it is, a traditional jobs, all this. Now we would like to see उसके आगे कुछ है क्या, जॉब के दौरान और कुछ कर सकते हैं क्या.
like as I said, you have huge opportunities. क्या कर सकते हैं आगे अपने को देखेंगे. पहले दौरान फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड, समझना चाहिए अपने को टैली प्रोफेशनल में कौन सा कोर स्किल्स अपन हासिल करना चाहेंगे. दिस इज द मेजर मेन, ये मुख्य स्किल्स है विच वी लर्न थ्रू टैली प्रोफेशनल्स इन अकाउंटिंग. कोर अकाउंटिंग स्किल्स है ये. अगर फर्स्ट बार देखें तो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, ये खाली एसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस, हर बिजनेस को जरूरी है अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बुक कीपिंग की. Our business process and understanding helps in consulting roles. TDS, GST, you all know that GST, TDS and tax compliances, crucial for regulatory advisory, financial reporting and MIS preparation, useful in financial analysis reports, tech savvy, operate multiple accounting and ERP systems, platforms, like installing software, customizing, all this comes under this part. Then most important is inventory and payroll management, critical for SME support, data management, data analytical skills. Big decisions के लिए कंपनी मालिक को ये जरूरी होता है कि ऑन द फाउंडेशन ऑफ डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग लेता है. कंपनी आगे कैसे बढ़ना है, प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा है, वेयर आर आई एम स्टक, ये डेटा इसमें मिल जाता है. एग्जाम्पल, ए प्रोफेशनल हेल्पिंग एन ई-कॉमर्स फॉर्म streamline inventory and finance. आप एक प्रोफेशनल है, you can help any e-commerce firm by streamlining his inventory and finance also. Basically what I would have forcing here is आप accounting में major relating to the businesses, these are the core skills in accounting. इसके अलावा कुछ नहीं है. As a for a freshers I would say that. Then for a fresher roles, अभी आपने जॉब की 96 स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर. कैरियर अपॉर्चुनिटीज अपने लिए टैली फ्रेशर्स के लिए, व्हाट आर दी जॉब अपॉर्चुनिटीज, हमके लिए क्या काम करने के लिए कौन सा स्ट्रीम्स अवेलेबल है. नाउ इफ यू लुक एट योर जूनियर अकाउंटिंग रोल्स, फर्स्ट लेवल में जूनियर अकाउंटिंग, दैट इज नथिंग बट डे टू डे अकाउंट मेंटेन करने की, बुक कीपिंग बोलते हैं उसको. एंड नेक्स्ट लेवल आ जाएगी अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, यू विल बी असिस्टिंग इन जीएसटी, टीडीएस, पेरोल एंड कैलकुलेशंस. और दूसरा आएंगी बिलिंग एंड इनवाइसिंग स्पेशलिस्ट, मैनेज क्लाइंट वेंडर बिलिंग, वेंडर इनवाइसिंग यूजिंग टैली. टैक्स असिस्टेंट, ही विल सपोर्ट सीनियर अकाउंट ड्यूरिंग टैक्स सीजन. अभी मार्च में आ गया, ही हैज टू फाइल द टैक्सेस एंड ऑल दैट. अक्टूबर मंथ में ही विल हेल्प द सीनियर अकाउंटेंट फाइलिंग द टैक्सेस एक्सेट्रा. डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये जॉब तो ऑब्सोलेट हो गया मेजर सिटीज में, but still it is there in some tier 2, tier 3 cities. That's the reason I mentioned, but it is also going to vanish it. Maintaining, आजकल पूरा scanning में आ गया, you QR code scanning and all that. So this job has become more simplified. This job is being replaced by analytics, data analytics. Just I want to tell you all that. Enter the maintain financial data accurately. Support staff for ERP implementation, help in setting a tally for new companies, टैली सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करना, इंस्टॉल करना, ये है पूरा फ्रेशर्स के लिए. ए फ्रेशर ज्वाइनिंग स्टार्टअप फाइनेंस डिपार्टमेंट टू हैंडल इनवॉइसिंग एंड लेजर मेंटेनेंस. इसके अलावा कुछ काम नहीं रहेंगे. फ्रेशर, इफ यू आर ए बीकॉम फ्रेश और ग्रेजुएट फ्रेश with tally knowledge, this is the roles you can expect. You cannot become a accounts manager, you cannot become a, say, what you called CFO. I'll show that also, right? And tax consultant also. Now this is a wonderful slide. You can think, हमेशा career ladder देखना है. any role of you are going to enter, उसके आगे अंत तक कौन सा रोल तक I can पहुंच सकूंगा. If I am in this role, when I can reach to this role, you should know it, that very important. अगर आपने accounting role में देखे तो in accounting domain, fresher से लेके CFO, CFO is nothing but Chief Finance Officer, okay, or CFO also you can be accounts officer, whatever you name it. But the leadership, that category, we have levels: entry, career, early level career, middle, advanced, leadership. अगर आप entry level में देखें तो people with basic knowledge of tally and graduate, either it can be commerce graduate or any graduate, they will land up entry level, that is data entry operator, junior accountant, billing executive. और आपको थोड़ा ज्यादा स्किल है
अकाउंट्स में यू नो हाउ टू फाइल टैक्सेशन, जीएसटी के बारे में जानकारी है आपको, और पेरोल के बारे में जानकारी, along with this billing and payables and all that. Then you will come to a second level. You can get as accounts executive, tax assistant, payroll processors. For a fresher, the first two levels, entry and early career की jobs की वो scope है आप लोगों को. But you have no scope as a fresher in the middle management, advanced and leadership में. उसके कारण क्या मैं बता देता हूँ, ये मिडिल लेवल की क्या होता है, अलॉन्ग विद द स्किल्स ऑफ दैट उनको और दूसरा स्किल्स की जरूरत होता है कि लीडरशिप क्वालिटीज, पीपल मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट कैसा करना है, एंड न्यू स्ट्रैटेजीज, हाउ वी शुड प्लान, यू शुड बी स्ट्रैटेजिक प्लानर, ये पूरा आवश्यकता उनको रहता है, टीम कैसा मैनेज करना उनको, वो कॉम्पिटेंस लेवल जरूरी है मिडिल लेवल की. Then they can become. So no fresher cannot come directly as a senior accountant. आपको ये समझना की बात रखना है आप लोगों को. So your levels are either as a fresher, entry or early career only. वैसे बढ़ते बढ़ते you can become these levels also. How I will tell you. Accounts manager again financial control and internal auditor. Leadership में financial manager बन सकते हैं आप, head of finance बन सकते हैं, CFO बन सकते हैं. एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं यहाँ पर देखिए, फ्रेशर हु स्टार्टेड एज बिलिंग असिस्टेंट, दैट इज एन एंट्री लेवल, देन मूव टू टैक्स फाइलिंग, दैट्स ए अर्ली कैरियर लेवल, देन विथ ऑल दिस एक्सपीरियंस, एक एक्सपीरियंस आता है 2 साल 3 साल 4 साल, एंड इज एडेड मोर टीम स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, देन इज बिकम ए सीनियर अकाउंटेंट एज अ मिडिल लेवल, लेटर इज मूव टू CFO leadership in a mid-sized company. So this is the career ladder, any from fresher to CFO. So ये आपको जानकारी है ना, you should have your own commitment for this. मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ एंट्री लेवल में, अगले साल में I want to enter in early career level. After 2 years, I would like to see my position in middle level. उसके दौरान 5 साल के बाद I have to sit as a CFO. This is what आपकी विजन रहना चाहिए. That is what you all have to have when you want to start to work in standard jobs of the accounting. When you don't have this ambition, there's no point you are growing it. It's all your mindset. It depends on your mindset. The mindset shift you need to understand. अभी तक अपन देख चुका है कि I have another slide also, then I'll take you to that. Mindset के बारे में बताऊंगा. Now we have a different confusion. We all have that. अपने सबको एक मिथ रहता है कि सैलरी क्या रहेंगी, because we are not aware. Salary is not standard in any state. Salaries, this is an example I am giving as per the industry standards. ये इंडस्ट्री के दौरान स्टैंडर्ड्स के बारे में बता रहा हूँ. This may not be accurate or anything, but there are certain parameters. Certain parameters के हिसाब से ये सैलरी रेंज है यहाँ पर. I have taken top few more only prominent states to understand you the demand of salary, minimum and maximum range. अभी महाराष्ट्र के, if you are belong to Maharashtra, if the salary belongs to you 18,000 से लेके minimum 25,000 तक. But there are certain parameters. No one will pay you 18,000 or 25,000. आपके पास वो स्किल सेट रहना चाहिए, उसकी वो कंपनी भी उतना हेल्दी रहना चाहिए आपको पे करने के. So if you see I have given left side, there are types. कंपनी टाइप के दौरान, if it is the MNCs and large companies, they will pay more than local small companies. अगर स्मॉल कंपनी उससे कम पे कर तो उसने नहीं पे करे, वो 10,000 से लेके 12,000 पे करेगा. That you need to understand. And depending on your role, cities, cost of living, आप बॉम्बे, बैंगलोर, गुड़गांव, चेन्नई में रहे तो आपको सैलरी थोड़ा ज्यादा देते हैं, because cost of living is very high. Additional skills, if you are having GST certification or internship, आपको ज्यादा सैलरी मिलने का आवश्यकता है, उनकी इसमें मौका मिलेगा. You can demand 10% more. Like industries, there are industries like finance, IT and consulting. They offer higher salaries when compared to education and retail. Retail में और education में कम मिलता है salary सब. So this is what you need to understand. This slide is to make you understand the reality of the salaries of this accounting domain for the freshers
ताकि आप लोग दूसरे सपने में नहीं रहने की मेरे को 50 चाहिए, 40 चाहिए, 35 चाहिए, नहीं, क्यों देगा उन्होंने? दिस इज द मिनिमम स्टैंडर्ड सैलरीज यू नीड टू अंडरस्टैंड. एंड कोई अब इंटरव्यू जाए तो यू शुड ऑलवेज से दैट सर इंडस्ट्री के हिसाब से पेमेंट करिए. देयर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज सेक्टर स्टैंडर्ड्स आर देयर फॉर एनी रोल एंड आल्सो एज पर द मिनिमम वेजेस एक्ट. उसके दौरान बोल रहे हैं आपको डिमांड नहीं करना है कि मेरे को 20 दे दो, 25 दे दो, नंबर कभी रिवील नहीं करना है. सर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारी सैलरी फिक्स करिए. You'll understand industry standards is this. उसके आगे नहीं जाएंगे, पीछे भी नहीं जाना है उनको. Now coming to the real thing, as I said, why look beyond traditional jobs? अभी अपना mindset क्या था कि हमें टैली करेंगे, मेरा ग्रेजुएशन हो गया, I want to settle in accounting role, I want to be GST compliance executive or inventory executive, पेरोल एग्जीक्यूटिव. सिर्फ जॉब के सोच रहे. 90% ऑफ अस विल थिंक ओनली दिस. एज आई सेड इन द बिगिनिंग, मैं पहले बोल चुका हूं, 90% जॉब के बारे में सोचते, बाकी 10% वो अलग सोचते हैं. व्हाट इज दैट थिंग का अलग अपने सोचे? इट्स ऑल योर माइंडसेट. थोड़ा माइंडसेट को बदला के देखो आप. शिफ्ट योर माइंडसेट. थिंक व्हाई आई शुड डू अ जॉब, कैन एक्सप्लोर अदर थिंग्स. और टैली सीखने का मेरे को व्हाट आई हैव द अदर अपॉर्चुनिटीज. सिर्फ जॉब ये किए नहीं, वी हैव सो मेनी अदर स्ट्रीम्स वेयर यू कैन अर्न मनी थ्रू टैली. दैट इज द ब्यूटी ऑफ टैली. आजकल कोई नहीं बोले, बट आई एम रिवीलिंग यू ऑल दैट. Unlike other companies, like you take SAP, Microsoft or anything, you don't have this opportunity because they are big tickets. और वो सॉफ्टवेयर भी बड़े कंपनी में यूज करते हैं, इंडिविजुअल अलाउ नहीं कर पाएंगे. बिकॉज योर द टैली इज यूज्ड बाय एसएमईज, यू हैव अ वेरी गुड स्कोप. आप छोटे गांव पे भी रहो, बट यू कैन डू बिजनेस विद टैली. ये मैं 100% कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ. आज तक कोई नहीं बताया, मैं भी नहीं बताया, बिकॉज आई डिड अ लॉट ऑफ लॉन्ग टर्म रिसर्च. हमने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को व्हाट एडिशनल वी कैन गिव बियॉन्ड द जॉब्स. So these are the career options beyond traditional jobs. आप देख सकते हैं, total 5 you are seeing here. As I said, the world is moving on the freelancing, that the gig economy, as I told you in the beginning. Freelance accounting services. आपको tally 100% आपको confident है tally में. Like you can offer services like tax filing, financial statements, payroll remotely. You have some platforms, Upwork, Freelancer, help finding these gigs. As I told you, projects अब मिलेंगे. कोशिश तो करना, immediately नहीं मिलते. There will be tough competition. So as a freelancer handling GST returns for 10 small companies, you will earn a lot of money. उसके लिए उतना आसानी नहीं है. To start this, first you should start here. यहाँ से शुरुआत आता है. Because you should know the market pulse, you should know the workload. What are the crux, what are the challenges you have. जब भी आपको यहाँ तक पहुंचेंगे आप, नहीं तो नहीं पहुंच पाएंगे यहाँ पर. You can't start directly. You should understand. आपको पता चलना है कि like आपको गाड़ी चलाना आना चाहिए. when you are buying any vehicle, आप कार खरीदना चाहते हैं, पहले कार को उसी मालूम रहना चाहिए कि कार स्टीयरिंग क्या है, ब्रेक क्या है, एक्सीलेटर क्या है, पूरा पता चलना है ना. then only buy car, no? कार को करके घर में लेके पूजा नहीं कर पाएंगे. So like that you should know. Then you have these great opportunities to become a freelancers, your own beyond traditional jobs. अभी अगर वो नहीं है, अपने पास उतना नॉलेज नहीं है, you can become a associate partner for Tally, consulting, financial consulting बोलते हैं उसके SMEs के. What you will do, small scale industries को आप क्या करेंगे, ये सॉफ्टवेयर सेल करके, डिप्लॉय करके, इंस्टॉल करके, you will get a money there, services there too. That everybody is doing it. You don't need to go anywhere. Sitting at home, you can earn money. खाली सॉफ्टवेयर भेजना है, इंस्टॉल करना है, छोटे मोटे, because its cost is very nominal compared to other softwares. And you should ask आपका अकाउंट्स को, I will give support, not only software installation. अभी एंट्रीज की मारना है, कुछ भी करना है, I will help you out. He will happily take that your help. आजकल
बहुत सारे छोटे दुकान वाले भी टैली यूज कर ले. सो ट्राई टू सपोर्ट देम. नहीं, ये मेरे से नहीं होता है. आई एम वेरी गुड एट टैली, मेरे को टैली बहुत अच्छा आता है. मैं कॉन्फिडेंट टैली, मैं टैली किसी को भी सिखा सकता हूँ. सो बिकम ए ट्रेनर, ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनर बन जाओ, टैली सिखाओ. हर बंदे को वो पैशन रहना है सीखने का. अगर किसी इंस्टीट्यूट में सीखने का नहीं है, यूडेमी में जाओ, आपका कोर्स पब्लिश करो, लाइव सेशन दो, आप कमाएंगे. और मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब चैनल खुद का खोलो, घर में बैठ के वीडियोस बना के छोड़ो, पैसा आएगी आपको. सो आजकल कंटेंट के ऊपर आधारित रहेगा यूट्यूब में. इफ यू मेक ए यूनिक कंटेंट, यू विल बी द स्टार इन द यूट्यूब. Many people are earning lakhs, crores of rupees in YouTube. I'm just giving an example of Tally. यार किस चीज में आपको शौकीन है वो कर सकते हैं आप YouTube में. But you have to have that passion. Then you can start. अब दोनों मिलके भी, आपका दोस्त और ट्रेनर दो भी है, छोटा फर्म खोलो, अकाउंटिंग सर्विसेज फर्म, and give these solutions. Like today, as I said, पहले भी cloud accounting की solutions demand is growing up, so that you can give solutions. Then अपने प्लेटफॉर्म में टीरियल कोर्स है, वो कोर्स सीख के लाइक यू कैन डू इंटीग्रेशन, मॉडिफिकेशन दी टैली. आप जोड़ सकते हैं. छोटा कंपनी रहेंगे, स्मॉल ई कॉमर्स और ऑटोमोबाइल कंपनी, उसका सीआरएम अलग रहता है. ऑल द डेटा उनको टैली में आना चाहिए. थोड़ा इंटीग्रेशन करें तभी आपको बहुत पैसा मिलेगी उनकी. सो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी अदर देन रूटीन जॉब्स. जॉब के साथ ये भी कर सकते हैं. इट्स नॉट दैट वो जॉब खोल के ये नहीं, ये भी करो, उसको भी करो, बट यू हैव लॉट ऑफ अर्निंग अपॉर्चुनिटी. दैट्स व्हाट मल्टीपल स्ट्रीम्स, मैं वही बताया आप लोगों को. दैट प्लेंटी ऑफ इनकम मल्टीपल स्ट्रीम्स है आपको पैसे कमाने के लिए. उसके लिए आपको सिर्फ टैली नॉलेज रहे तो बस नहीं होगी. यू शुड हैव अदर मल्टी स्किल्स, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग बेसिक्स. आपको प्रमोट करना है आपका सर्विसेज को थ्रू इंटरनेट, इंस्टाग्राम, फेसबुक. आपको वो आना चाहिए. हाउ टू पुट इट अट्रैक्टिव, वो चाहिए आपको, वो लर्न करने का. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द बिजनेस इज आपकी कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट शुड बी, योर कम्युनिकेशन शुड बी वेरी स्वीट एंड स्मूथ, बिकॉज यू आर गोइंग टू इंटरेक्ट प्रोफेशनली विथ क्लाइंट्स. आपको बिजनेस आना है बोल तो बहुत प्यार से, मीठा से बात करना पड़ता है. जैसे घर में चिल्ला के ऐसे नहीं बात करे तो कोई बिजनेस नहीं देंगे आप. और तीसरी, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग. यू शुड आल्सो प्रोवाइड टू द कस्टमर्स एज अ वैल्यू एडेड कंसल्टिंग. उनकी फोरकास्टिंग देना पड़ता है, एनालिसिस. आपका बिजनेस अभी ऐसे है, अगर फोरकास्ट में इतना परसेंटेज की प्रॉफिटेबिलिटी रहेंगे, इसी बताना पड़ता है. There is no escape today. All industries, all skills are embedding with AI. Now AI finance is a game changer. आप जितना जल्दी सीखे तो उतना फायदा आपको होंगे. ऑटोमेट रूटीन टास्क बनाओ, ऑफर एनहांस एनालिटिक्स, एडवांस एनालिटिक्स, ताकि फॉर एग्जांपल ए कन्वेंशनल अकाउंटेंट, आज तक अकाउंटेंट है, and he has learned AI tools. Now you can give to that company predictive cash flow. भाई आपका कैश फ्लो ऐसा है, इसमें प्रॉब्लम है, you go ये or to focus on this. That gives them a forecast of this analysis. जब भी वो मालिक को अच्छा रहेगा, आपको पेमेंट भी वैसे ही रहेगा. So when new technology is coming, the sooner the better. आप जितना जल्दी सीखे थे उतना लाभ पड़ेगा. So this is what you need to understand. Now I'll open for Q&A sessions. Jyoti, over to you now. Thank you, sir. Thank you so much for the wonderful session. I guess ये self explanatory बहुत ज़्यादा था, तो मुझे नहीं लगता कितने questions आएंगे. But again, the forum is open for the questions. आपके पास कोई भी queries हैं, because जब session चल रहा था ना, कुछ छोटे-छोटे questions आ रहे थे. But जैसे एक question था regarding the pay, but the very next moment आपका slide आया with the salary, and I think you explained that as well. So वंश मित्तल का ये क्वेश्चन था कि पे आउट क्या कैसे रहता है, तो वो आई थिंक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. बट सर, इफ यू वांट टू ऐड ऑन समथिंग ऑन द सैलरी पार्ट, सो यू कैन ऐड. Salary for the employees.
सर फ्रेशर कैंडिडेट्स एम्प्लॉय मतलब सैलरीज कितना रहता है, कैसे रहता है, सैलरी क्वेश्चन पे कैसे आंसर करना है, वाज अ क्वेश्चन। अभी मैं You ये already- केस स्टडी के हिसाब से, एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैं बता देता हूँ, जी ठीक सर। है, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर। एक छोटा कंपनी है एबीसी कंपनी, इट्स ए स्टार्टअप कंपनी, लेट्स टेक ए स्टार्टअप कंपनी, इज हायरिंग, वो उनके अकाउंटेंट के लिए हायर कर रहा है, सो ही हैज पब्लिश्ड अकाउंटिंग पोजीशन इन ए न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया एनीथिंग। 10 लोग आ चुका है, 10 लोग आ गए उनके इंटरव्यू के लिए। अभी मेरा बजट है, कोई भी आने दीजिए, मेरा ये अकाउंटिंग रोल के लिए आई विल ओनली ऑफर देम 10 to 15। अभी किसको 10 देगा, किसको 15 देगा, अपने को पता नहीं है, बट इनका एम्प्लॉयर माइंडसेट में 10,000 से लेके 15,000 तक मैं सैलरी फिक्स करेंगे ये रोल, बिकॉज दैट रोल डिपेंड्स ओनली दैट मच, उसके अलावा नहीं दे पाऊंगा। अगर आप 40 बोले तो नहीं दे पाएंगे ना। एम्प्लॉयर पहले फिक्स कर लेता है कि सैलरी बजट फॉर ईच रोल, ये समझने की कोशिश करो फ्रेशर्स की कास्ट। अभी जाके आप इरियलिस्टिक अनरियलिस्टिक सैलरी पूछेगा, आप जितना भी आपके पास स्किल है, आपके पास कॉम्पिटेंट लेवल्स है, व्हेन यू डिमांड अनरियलिस्टिक यू विल बी थ्रोन आउटसाइड ऑफ द कंपटीशन, ये याद रखना है आप लोगों को। सो यू शुड बी रियलिस्टिक as per the industry, that is what I said. You should demand the salary, always say that industry standards, don't commit any number। आपको पता नहीं है कौन सा कंपनी कौन सा नंबर पे फाइनल करके बैठे, एक मालिक बोला 10 से लेके 15, दूसरा कंपनी रहेगी बी कंपनी, मैं 15 से 25 तक देने को तैयार हूँ फ्रेशर्स के लिए। सो वी डोंट नो, कभी भी कमिट नहीं करने, बट डेफिनेटली एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स अगर वो रिवील करेंगे, बोलेंगे मैं 20 दूंगा, then you have a scope to negotiate. Sir, as per industry standards, as per my skill, I have done this and I also have done internship, मैं projects भी कराया, तो I deserve 25K, you can ask in that way। तो लॉजिकली आपको क्लोज करना, नॉट ब्लंटली, नहीं नहीं मेरे को 25 दे तो मैं काम करूंगा, नहीं करेंगे, ऐसा नहीं बोलना है। सो यू हैव टू बी वेरी सूदिंग, एक्सप्लेनेशन के साथ, लॉजिक के साथ बोलना है। Yes sir. So I think that answers the question, because while आप explain कर रहे थे sir, तब ये question आया था, though most of the points were clear then and there only, but अभी अगर कोई query रह गया होगा तो I hope this answer clarifies all the doubts regarding salary। So अगर इसके अलावा कोई questions है, just put that in the chat box, meanwhile I'll take another one। एक है sir, GST return से अगर GST return he is doing, so can he start his own business और क्या उससे ज्यादा income आएगा? सो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का एक क्वेश्चन है। सिर्फ जीएसटी फाइल करने से इनकम नहीं आएगा, यू हैव टू गिव कंसल्टेशन ऑन द जीएसटी रिटर्न्स, एंड यू ऑलवेज, आपको देखना है कि लॉन्ग टर्म रिलेशंस, एक फाइलिंग से आपको पैसा नहीं आएगा। सो आई वुड सजेस्ट एक फाइलिंग फ्री करके बताओ आपकी काम की है, आपकी काम की सैंपल बताओ, देन यू कैन डिमांड हायर इनकम फॉर द नेक्स्ट फाइलिंग्स एंड ऑल, दैट इज हाउ द बिजनेस गोस ऑन दैट। डोंट बी ग्रीडी इन द फर्स्ट ट्रांसैक्शन, पहले आपको भरोसा दिलाना पड़ेगा क्लाइंट को ऑन योर क्वालिटी ऑफ वर्क। क्वालिटी ऑफ वर्क पेज यू हायर देन एनीथिंग एल्स, ये याद रखना है, और आपके ऊपर आपको विश्वास रहना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना है। डोंट बी डिस्परेट इन नेगोशिएशन, बी फर्म एंड बी लॉजिक व्हाई यू आर डिमांडिंग दैट अमाउंट। आप अमाउंट कितना क्यों डिमांड कर रहे हैं, उसको लॉजिक बताए, तो ऐसा ही बोल रहे हैं कितना देना जरूरी है। So just filing GSTR, why he will pay you? Tell me. You should give consultation. Sir, another question. One is asking that what is the minimum qualification required to start up his own business? Is there any qualification mandatory to start up, or he can do it anytime? Yes, this question I think morning also अपने को आया था, same question. हाँ, yes sir, English ऐसे not the same question आया। Yes, yes, yes. हाँ, ये सवाल में सुबह भी आया था। Yes, I would say that qualification is a mandate. एक जरूरी qualification है बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए एक जरूर qualification है, वो आपका आत्मविश्वास, your confidence।
अगर वो नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप. There are many people who are successful in the business without any academic qualification. उनके बड़ा qualification है उसका आत्मविश्वास. अगर वो रहे तो आगे बढ़ सकते हैं आप. So that is what my answer also. सर अमित और कुमार इसके जैन अलावा I want to add few more things in business. Just having self confidence से आपको business नहीं बढ़ाएगा. First आपको research करना पड़ता है अपने आप के ऊपर, how you are eligible to do the business. मैं क्या काबिल हूं करने का बिजनेस के लिए? बिकॉज जस्ट आई हैव मनी आई कैन डू बिजनेस? नो. आपको पूरा जानकारी रहना चाहिए कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं उसके बारे में. आप कपड़े का दुकान बिजनेस शुरू करने, कपड़े के दुकान के बारे में पूरी जानकारी रहने, कंपटीशन के बारे में, प्राइसिंग के बारे में, मटेरियल के बारे में. ऑल दिस यू नीड टू डू एज आई शोन यू इन माय प्रीवियस थिंग स्लाइड्स. पहले नौकरी करो, समझो, बाद में स्टार्ट करो. I tell same thing in business also. I've seen B schools, big IMs. There you'll see sometimes they'll be on the street selling the dictionaries. They want to understand, experience that sales skills, not to do something else. अपने कभी वो grounding में रहे तो then you'll be successful. Just having money, मैं AC रूम में बैठेंगे सबको करेंगे, you'll not be successful. पहले रिसर्च करो, समझो डिमांड एंड सप्लाई, किस तरीके से कौन सा बिजनेस करना है, then you start the business. You will be most successful and you will be in a stable position also. Yes, Jyoti. yes sir. I think the question may not be very much relevant, but Amit Kumar ji ने पूछा है, Amit Kumar Jain ji ने, तो I think we should take this. He's asking कि when we publish any job on institute level, students can't see contact number of the employer. Yes, I want to reply. Amiji, yes, you asked a very good relevant question. Now we have done this employability contact details when they are registering it, and we are not mandated because उनकी इच्छा रहता है, because they don't like to publish the number. The number is with us. उनका डेटाबेस में, अपना डेटाबेस में रहता है, but most of the employers, they don't want to publish their contact details. It's a nuisance for them. 100 calls they'll get. That's the reason they don't want it. They want to access the data through the portal only. Some consultants, or few of them, they will publish it, numbers. But if on the Tally Job portal, if any learner is applied, is not getting calls or anything, you can reach out my placement team. They will help you out to get the feedback also. Contact details, it's not a mandate where we can't force the employer to publish in the Tally Job portal. It's not only in my portal, you can see in Naukri or anything also. You'll not find it. Maximum you'll find the consultancy numbers, not the company numbers. That is purely in their control. I can't force them also. सर कंटिन्यूशन में एक और क्वेश्चन है अमित जी का. ही सेइंग कि व्हेन एनी जॉब ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेटेड आफ्टर 30 days only, there must be an option to reactivate if possible, and this 30 days period also is questionable. Yes, it's not 30 days. Yes, the tenure is, I guess, not 30. Atma portal 30 days. The reason we can activate it. Reposting can do. We'll work on that. It's a good feedback. I am note downing it. We'll try to extend it, and we will also have the another button reactivate it. Noted it. Amiji, we have noted this. Your feedback. Excellent feedback. Sure, sir. Thank you for noting it up. I think अनमोल चेतन सिंह जी saying good evening sir. इसके अलावा उन्होंने कोई क्वेश्चन डाला नहीं है, तो I wanted to carry forward his wishes to you. And कृष्ण जी is having a doubt that he's saying कि जॉब नहीं मिल रही है, क्या कर सकते हैं? जॉब नहीं मिल रहा है. Which location? सिंपल एक ही सेंटेंस में है.
कृष्ण कुमार जी ने काफी सारे पॉइंट्स डाले हैं कि इंटरव्यू होता है, कैसे होता है, जॉब नहीं मिल रही है। सो कृष्ण कुमार जी, अगर आप अपने पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाए। मीनवाइल आई डोंट नो व्हाट टू कृष्ण से, कुमार बट जी, ये मेन आईडी आपका स्क्रीन पे दिख रहा है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके ऊपर मेल डाल दीजिए with your contact number. We'll try to reach out and we'll solve your problem. Don't worry, we will be placing you if you are a Tally student. आपको जॉब जरूरी मिलेगा, but you should ready with full skill set of Tally and the interview skills also. There are plenty of jobs. That's what I said. Mindset, you have to shift. Mindset shift रहना चाहिए, and you should ready to accept new roles. You can't say I want this job, then we can't get it. So please take the screenshot, all of you. My request, any queries you have, put your query with the contact number. Personally, I will reach you and I will solve your issues. Yadi, any questions still, Jyoti? Yes, sir. Sir, Vansh Mittal is saying that could you share your source to reach you? So I think this is the email ID only. I think there is rather than question, there are feedbacks and regarding jobs only. The queries are mostly related to that. So if everybody has taken the screenshot, I would just launch a small poll question for your feedbacks. If you have any questions, I'll take. Otherwise, I'll give my conclusion note. I think yes, sir. It's like more. Everybody is now asking about job. कि tele course कर लिया है, हरदोई में हूँ, job कैसे मिल सकती है? I think this is the only question. More of the questions, There's like multiple jobs. There are plenty of jobs. First and foremost, reach out your centers, apply on Tally Job Portal. And my request to the centers, if you are like Amazon over there, share us that which companies they applied the jobs. If they didn't get any response, we'll try to share the feedback why they're not it. But couple of certain things I would like to tell you the most myths what is happening in the Tally Job Portal by the learners. Blindly, they don't see the job profile, location, gender, anything. Keep on clicking apply, apply, apply it. And no employer will look. As an employer, my एक job post करा है, I am getting 100 applications, irrelevant applications. Why I will call them? You tell me. मैं देखूंगा नहीं application को. और ये job portal में इतना simple कर दिया, आपकी resume attract नहीं रहता है. It's all copy pasted. You don't put proper skill set. एक जनाब ने लिख देते हैं कि certificate Tally Education Private Limited, qualification degree from so and so university, and some person put Tally Essential level 1. As an employer, how I understand Tally Essential 1? You have to write what you learn in the Tally, write the chapters clearly. At your backside of your certificate, it is there what topics you are learning. That is the what you should do it. So ये पूरा crux है why you are not getting calls. Give attention. You should stand out your CV among the hundreds of CVs. I will take a separate session on the CV later. This is how you have to think it. So, however, I request any one of you, you applied jobs, carefully read the JD, location and everything, apply. Blindly don't apply. Some of them to expiry jobs, they have applied it. What? Not everything they applied it. So be careful. When you apply it, note down, discuss with your center. They will talk to my center people. We'll work on that. Sure, sir. Like morning, here are many people who are asking for your LinkedIn ID, contact numbers, and mail IDs, your personal details. So if you can just put a comment on that. आपको कैसे connect कर सकते हैं? People want to know. This is one common. I'm a company person, placement support. With your contact number, personally I'll call you and I'll meet you. That's what I'm telling. Then I will share all this LinkedIn profile में आपको मेरा नाम से पता चल जाता है. मूर्ति Tally मार दो, मिल जाएगा आपको. कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है.
Okay, so I would request Mr. Vansh. I hope आपको मिल गया because he is multiple times is putting the same thing. ठीक है. So I think, sir, we can conclude the session here. I would request you to just conclude it, and we can close the session now. Yeah, thank you for all joining this session on career trends and emerging opportunities for Tally learners and also participants who are viewing YouTube and my partners also. It's been a pleasure walking you through the evolving landscape of accounting careers. We have seen how the industry is growing consistently, the rise of digital and remote work, and we platformed how platforms like Tally are opening up exciting new paths, not just employment, but also entrepreneurship and freelancing. I have given in depth of these things, the scope beyond traditional jobs. As a learner, future professionals, you are stepping into space filled with opportunities. A lot of opportunities you have, and with the right training mindset, there is no limit. You can go further. I encourage you to stay updated, continue building your skills, and most importantly, stay confident in your journey. If you have any questions, need your career guidance, just want to stay connected, feel free to reach me. The mail what I have mentioned on the screen, please again I request you to take a screenshot. Wishing all the best very in your new careers. Stay curious, stay committed, keep growing. Thank you once again. Take care. Thank you, Jyoti. Over to you now. थैंक यू सो मच सर, आपके सेशन के लिए. आई थिंक ये चैट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट्स हैं कि सेशन आज बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी जानकारी सबको मिली, काफी इंफॉर्मेटिव सेशन था. एंड ये इंफॉर्मेटिव इसलिए था बिकॉज आई गेस बहुत सारा रिसर्च इसके पीछे गया है, इस 1 घंटे के सेशन के पीछे. सो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को कोई कमेंट्स हैं या फीडबैक्स हैं, लाइक कि नेक्स्ट सेशन आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, या फिर कोई एनी स्पेसिफिक थिंग जो एज अ फीडबैक आप शेयर करना चाहते हैं, यू कैन शेयर इट हियर. आपका ये इसी प्लेटफॉर्म पे आप शेयर कर सकते हैं. जो लोग हमें YouTube से सुन रहे हैं वो YouTube पे भी कमेंट्स कर सकते हैं, वो भी इक्वली वैलिड है. वहां से भी हम लोग पूरा कलेक्ट करते हैं डेटा जो भी आप लोग शेयर कर रहे हैं. एंड अगेन थैंक यू एवरीवन, आप लोग ने ज्वाइन किया. टू ऑल द पार्टनर्स हु मेड देयर लर्नर्स अटेंड दिस सेशन व्हिच हैज ऑफ कोर्स, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए. आई वांट टू विश एवरीबॉडी गुड लक इन देयर करियर. आप सबका करियर बहुत अच्छे से स्टार्ट हो, आपकी करियर जर्नी बहुत आगे जाए, आप अपने सारे ड्रीम जॉब अचीव करें, जो भी आप करना चाहते हैं आप सबको मिले. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. Thank you for attending this session. Thank you so much, Murthy sir, for making this session very informative. Thanks a lot, sir. Thanks once again to all of you, sparing your valuable time. Thank you. All the best.